सुरू होणार आहे तो अर्थातच आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी मी सांगू इच्छितोय मुरुड विपक्ष कामोठे. मुरुड या संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकला आणि सर्वात प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते कामोठे संघाला. तर इथे सामना सुरू होतोय आणि सामना सुरू होण्यापूर्वी काका म्हात्रे आणि मी स्वतः इथे समालोचक म्हणून आहोत, परंतु या डॉक्टर फॅमिलीमधील एक डॉक्टर असे आहेत जे खेळाडूसुद्धा आहेत आणि समालोचकसुद्धा आहेत. इंग्लिश कॉमेंट्रीमध्ये त्यांचा हातखंडा आहे. तर आपण ऐकूया त्यांचा आवाज. सन्माननीय साजिद टाके सर, धन्यवाद. Thank you, Yasin sir, for giving me the opportunity to take over the mic. A very good morning to all of you. And that's over the fence, over the heads for 4. So the very first match between Murud and Kamote, Murud doing the batting. First delivery, right? Sorry, Kamote doing the batting. The striker is Hemant and Dr. Tejas Khopkar as a non-striker. A good delivery right on the middle stumps for a single. First ball boundary, second ball single, two balls gone, 5 on board, no loss. That's the analysis for this morning. Right arm round, jersey number 45. Short pitch delivery over the heads. We'll have to see whether it's going to travel, but there's a fielder there. And they've taken 1 run comfortably. They've gone for 2 easy runs. That's good running between the wickets. For your information, let me tell you that there is lots of moisture, lots of dew this morning. The ball really gets wet, and the strategy would be to go over the top right early so that the ball doesn't get wet, and once it gets wet, it slows down as well. This time an over-pitch delivery, or rather it was almost a yorker, but the batsman did well to convert that into a single at mid-wicket, or you can say, yeah, mid-wicket, okay. Jersey number 45, right arm round. Lovely delivery there for a single, but he's misfielded there. There's a player there, and 1 run comfortably taken. 9 for no loss. Last ball of the over, 9 on board. Beautifully played, but there's a player there for a single. Nice bowling at the end of 1 over, 10 runs. Still a little bit expensive, but that's fine. It was a power play over, so 10 runs should be good enough. But as I was just saying, that there's lots of dew in the morning, at least for 1 match. So it's better that the batsman hits over the top and accumulates the runs, because if he wants to go along the ground, then there is lots of moisture, because of which the ball tends to slow down and the ball cannot travel the distance to the fence. So let's see what strategy the Kamote team have. It's a wonderful unit, tremendous batting power, tremendous bowling power, and they are battling against Murud, who is heavily packed with top-class batsmen there, young stars also. Lots of young entrants have come in that team. So was the likes of Wasim and Dr. Patel, they are the guiding force to that team. So that's jersey number 9. Dr. Patel, experienced campaigner, 09 jersey. Left arm over the wickets for a single, straight into the hands of the mid-wicket. A single there.
Single against Dr. Patel. Dr. Patel, left arm over the wickets. That's up in the air. Should there's a fielder there, and he's taken it very, very easily. An easy catch there. And right when he saw that the ball is up in the air, he knew that his safe hands is going to grab that catch. He was absolutely thrilled, absolutely comfortable, and he's taken it so well that now there will be a huge confidence for the Murud team because the batting. The next match would be between Uran and Mahad. So both the captains, both the teams are requested to gear up, come to the commentators box. Both the captains, they should come here and come for the toss as early as possible. Dr. Sunil Patil has sent Dr. Hemant packing. That's nicely played, but there's a fielder there. They're taking one run fast, and what a wonderful fielding there. He picked up the ball on the run and threw it straight to Dr. Wasim, who is guarding the area of mid wicket, short mid wicket, in fact. That's a relay throw, as they say. Relay throw. That's straight in between the gap. Should cross the boundary. Yes, it has. That's 4 beautiful runs on the offside. To the boundary again. What a comeback from the batsman. It was a wicket there in the just 3 balls before, and 4 plus 4, 8 important runs. The score now is 20-1. Second over in progress. Dr. Patel got an experienced guy. He knows where he has to bowl. But the batsmen are right on top of their game. And that's how he has deceived the batsman. Wonderfully bowled. Fantastic delivery. The batsman wanted a wide, but the umpire is reluctant. And umpire knows his job best. What view the umpire can get, nobody can get the view. Even the batsman, he's committed to play somewhere else and then realize that he wants a wide. But umpire knows he does the best job for the team, for both the teams in fact. Absolutely neutral umpires, Advocate Pandit Joshi Sahab, experienced character on the field as umpire, and Sandesh Sahab. They both are doing their duties wonderfully and they are going to do it throughout the day. They're the most experienced people. They have the best view on the ground. Nobody can question that. And they're the most neutral, they're the most famous characters. Advocate Pandit Joshi as the main umpire and currently Sandesh as the leg umpire. Sorry, Advocate Pandit and Joshi Sahab as the leg umpire. And scorer, the one who is scoring since yesterday, he is Mr. Sandesh. Score 20 for 1 wicket. Okay, Sankesh is the scorer. Sankesh is scorer. Online scorer operator is Sagar. And cameraman is Sanskar.
These are the people behind the curtains, but their job is equally important. Sanjay there, right arm over, and he misses it altogether. Sanjay Patil, jersey number 100. Santosh Khade as a non-striker. Sanjay Patil, right arm round for a single there. Score 21 on board, 2 wickets down, third over in progress. Sanjay Patil, short pitch delivery outside the off stumps. It's going to be a wide anyway. So wide plus 1 run. Yes, umpire, wide. Thank you very much. Wide plus 1 run. So 2 runs and 1 extra ball. In this kind of format, what the teams have to realize is that they cannot afford any extra runs because every run counts, and if a wide or a no is given, then extra run goes and extra ball goes. That's a very good ball there, right on the middle stump. 1 run taken. The batsman wants a second run, but it's not to be. The fielder on the long on, he collected the ball soon and released it very fast. And Khopoli team, Dr. Sabne sir and Dr. Hussain. It's a jubilant team after that performance. Nice performance by Dr. Darshan from the Khopoli side. Sanjay Patil doing his job wonderfully. That should be over the fence. And he's attempted that. He has attempted that. If he had taken that, it would have been a classic catch and could have been the best catch of the tournament. And but then he just had a hand to it and was not able to catch it. Fantastic attempt there. Similar ball but flatter for a single. Salman doing the job again for his team. So Sanjay Patil, he will be happy by bowling those 5 balls, but this one ball, if Salman would have plucked it, it would have been a classic catch. 3 overs gone, 2 wickets down. The score is now 32. 32, the score on board. Santosh Khade sir and Manoj, they are doing the duties for their team. Kamote 11. Santosh Khade, very experienced guy. Next match between Uran and Mahar to be played immediately after this. Both the captains are requested to get their team together, and both of you please come to the commentators box for the toss. Patel sir again, Sunil Patel, 55 number jersey. Sorry, Dr. Praveen. It's in the air and Wasim's safe hands have taken that catch.
responsibilities to bowl the last over. Jersey number 55. Right arm round, a very beautiful ball out of the off stumps. The batsman just not able to read it. Arun, the new man in, he totally went blank. All the lights were off. He could just not read the ball. He could just not see the ball. That's the experience of Jain sir. This time, another ball outside the off stumps, and Arun went fishing out, half-hearted, could not read it again. And he was amazed that he didn't get a wide for that. But all in all, that's Jain sir's beauty. He knows where he has to pitch the ball to which batsman. That is the power of experience, and this time over the head of the infielder for a single. Jain sir enjoying himself on the field. सर एक जमाने में आप भी ऐसा ही करते थे. Jain sir, playful character. That's up in the air, should be a catch. There's a fielder there, very high catch. Sometimes there are chances of misjudging it. See, exactly what I was saying. There are chances of misjudging it, and exactly that's what has happened. A high catch is never easy. You have to have perfect judgment, perfect concentration, perfect eyesight to get to it. Another one in the air. Wow, what an attempt that was by Sanjay, but misses it, and they've given away 2 runs, taking a third, and he should be out. Yes. But that's the only way they could try to get an extra run. Is it total? 37. 3 wickets down, 4 overs gone, 37 on board. Target is 38. Target is 38, 37 to equalize, 38 to get. And I think it's going to be a tooth and nail fight, because 38 on board. If Murud team have to cross to 38, they'll have to really go over the top in the first 2 overs, and then they can try to consolidate and finish off. That's the only target. But we have Kamode team. They have lovely bowling there. Fantastic bowlers. They have pace, they have spin, they have in-breakers, they have out-breakers, everything, all sorts for the situations. Whatever situation demands, they have everything. They have all kinds of bowler. They have bowlers who can bowl short pitch deliveries into the rib cage. Then they have bowlers who can spin the ball. They can make the batsman dance. Yeah, for toss please, Uran team versus Mahar. Yes. Turner, आप जा रहे हैं उधर? मैं थोड़ा ये मैच करूं? ओके चलें. For this match, we are going to have a conversation commentary between myself, Dr. Sajid, and Yasin Merchant Sahab. Yasin Merchant Sahab in Hindi and myself in English. एंड सर ये अंपायर्स की थोड़ी सी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ पर कि आपके जो क्लोज कॉल्स होते हैं वाइड्स के, जहाँ सबको लगता है कि ये वाइड है, लेकिन आपका जो कंसंट्रेशन वहाँ पर होता है, आपका डिसीजन इतना परफेक्ट होता है कि वो वाइड नहीं रहता है. तो इसके बारे में अंपायर साहब आप क्या कहना चाहोगे कि जो क्लोज कॉल्स होते हैं जैसे रनआउट्स है और जो क्लोज कैचिंग्स है, उसके बारे में आपको क्या कहना है, ज़रा बताइए. एडवोकेट पंडित साहब. गुड मॉर्निंग. बाहर से दिखने से ऐसा लगता है कि बॉल इज गोइंग फार अवे फ्रॉम द बैट्समैन, बट राइट पोजीशन पे अंपायर्स रहते हैं तो उनको पता चलता है कि एक्चुअली बॉल कहाँ से ट्रैवल हुआ है. तो थैंक्स टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन कमिटी फॉर इनवाइटिंग अस
for this wonderful Doctors Premier League 224, and all the best to all the doctors from all the officials of this tournament. Thank you. थैंक यू वेरी मच एडवोकेट पंडित साहब द एम्पायर. एंड यहाँ पर यासीन भाई मैं कुछ पूछना चाहूँगा आपको कि ये जो 38 ऑन बोर्ड है, 37 टू इक्वलाइज, 38 ऑन बोर्ड, लो स्कोरिंग मैचेस रहती है आफ्टरनून तक क्योंकि यहाँ पर ड्यू हुआ करती है. तो ये स्कोर कामोटी टीम ने जो कभी बनाया है, मुरुड टीम इसको किस तरह सरपास कर सकती है? सरांना मी थोडंसं थांबवतोय. नाणेफेक संपन्न होते. तिसरा सामना आहे उरण विरुद्ध महाड. डॉक्टर कपिल सर यांच्या शुभसे ही नाणेफेक संपन्न होईल. उरण आणि महाड हेड अँड टेल्स, छापाणी काटा. आणि पाहूया दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा देऊया. एक चांगलं क्रिकेट आणि या चांगल्या क्रिकेटच्या माध्यमातून या ठिकाणी डॉक्टर्स प्रीमियर लीग 2024. तर नाणेफेक संपले डॉक्टर कपिल पाटील सरांच्या शुभ हस्ते. आणि हेड अँड टेल्स या ठिकाणी मात्र आपण पाहिलं तर उरण संघ या ठिकाणी नाणेफेक जिंकते. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम निश्चितच आपण काय घेत आहे, बॉलिंग प्रथम क्षेत्ररक्षण पत्करते. आणि वारंवार आपण पाहिलं की दवबिंदूचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जातो प्रत्येक संघाच्या माध्यमातून, आणि तुम्ही देखील तो प्रयत्न करणार आहात. समोरचा संघ महाड आहे, एक तुल्यबल संघ आहे. काल आपण पाहिलं किती धावांपर्यंत त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न असेल. 50 पर्यंत त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न राहील. 50 धावांचं योगदान पण रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल असं ते म्हणाले. कारण त्यांच्याकडे मोठे फलंदाज आहेत, त्यामुळे त्यांनी असं सांगितलं की 50 धावांचा रोखण्याचा प्रयत्न असेल. हरकत नाही, तुम्हाला शुभेच्छा देऊया. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं महाड संघाचे संघ नायक आहेत. महाड संघ म्हणलं तर निश्चितच योगेश पेंडकर हे जे नाव फार महाडमधलं लोकप्रिय आहे. तर तुमच्या वाटेला आता मात्र फलंदाजी आली. सर तुम्ही किती धावांचं योगदान द्याल? गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. खरोखरच ह्या प्लेयर्सवरती आम्ही गेली 7-8 वर्षे आहोत. सतत 3-4 वर्षामधनं आम्ही फर्स्ट प्राईज, सेकंड प्राईज, थर्ड प्राईज, आमचे सर्वच प्लेयर्स एक चांगल्या प्रकारचे यावर्षी नक्कीच चांगल्या प्रकारचा परफॉर्मन्स करतील. यामध्ये आता जितू, डॉक्टर स्वप्नील, डॉक्टर राजेश शिंदे, डॉक्टर एहसान शेख असे नामांकित प्लेयर्स आहेत. आणि खरोखर अतिशय उत्कृष्ट. आम्ही जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू यावेळेस, कारण का आता पण आम्हाला जर पुढच्या टॉपला जायचं असेल तर चांगला स्कोर, रन रेट ह्याची खूप गरज आहे. त्यामुळे आम्ही पण हे लक्षात ठेवूनच आमचे प्लेयर्स स्ट्रॅटेजी केलेली आहे त्यांनी, आणि एक चांगल्या प्रकारचा क्रिकेट आता पाहायला मिळेल असं मी ग्वाही देतो. नक्की सर, तुम्हाला देखील आपण शुभेच्छा देऊया. सामना सुरू झालेला आहे आणि या ठिकाणी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा जाऊया साजिद टाके सरांकडे. धन्यवाद. Thank you, sir. So we have here decided to go for a conversation commentary, and Yasin Merchant is there with us. So this time it's right arm over the wickets. Hemant, jersey number 25. Short pitch delivery outside the off stumps, over the heads of the point, and covers vision for 4. वेलकम करता हूं और आप सभी को ले चलूंगा इस शानदार मैदान पर. और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा साजिद सर कि कैच अपने किसका ड्रॉप किया है. आदित्य को जीवन दान मिला पहली गेंद पर, और जिस आदित्य ने कल एक ही इनिंग में 6 छक्के लगाए थे, आज पहली ही गेंद के ऊपर उन्हें आउट करने का सुनहरा मौका आपने गंवाया है. तो आपका हश्र क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा ही. ये लीजिए फिर से एक बार जिस हश्र की मैं बात कर रहा था, ये वो हश्र है. परफेक्ट जजमेंट है यासीन भाई आपका. आदित्य जैसे खिलाड़ी है, इनको तो लाइव देना, इट इज़ लाइक यू आर द बिगेस्ट सिनर, बट इट्स क्रिकेट. आदित्य को एक लाइफ मिल चुकी है यहाँ पर, दैट इज़ द रियलिटी. एंड इसी के साथ इनको जीना होगा कामोटी टीम को, कि दे हैव टू रियलाइज द फैक्ट दैट आदित्य इज स्टिल दे ऑन द ग्राउंड, ऑन द क्रीज. और एक बॉल में इनका 6 लग चुका है. लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर. गेंदबाज बंद है. हालांकि गेंदबाज ने पूरी पुरजोर कोशिश की है कि आदित्य को चकमा दिया जाए, फंसाया जाए. पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पर 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. कुल मिला के जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत. 4 ओवर का यह मुकाबला है. 38 रन बनाने हैं सर. पहले ओवर में ही अच्छे खासे रन बन रहे हैं.
उठाने की कोशिश तो करेंगे क्योंकि ये एक मंजे हुए खिलाड़ी है। एंड जैसे आप कह रहे थे, दिस इज ओवर द हेड्स ऑफ द मिड विकेट फॉर 4. Fantastic batting in the first over. रहन सहन होता है, मगर आज उनके अंदर का जो बच्चा है वो बाहर आ चुका है और ये मुरुड के सारे डॉक्टर्स वहां पे डांस कर रहे हैं। ये जो बच्चा के आप बात जो कह रहे हैं, ये सारे डॉक्टर्स को ये 2 दिन के लिए बच्चा बनने के लिए ही पूरे साल भर की मेहनत रहती है. एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट फॉर दिस 2 days. तो ये 2 दिन ऐसे होते हैं कि हमको हमारे हिसाब से रहने का रहता है. हम सारे अपने एडमिटेड पेशेंट्स को डिस्चार्ज करके यहाँ पर आ जाते हैं. जो नहीं आता उनके लिए पेशेंट्स हम भेज देते हैं, लेकिन हमको वो 2 दिन जो यहाँ पर प्रॉपरली एंजॉय करना है, हमको बच्चा बनने के लिए यहाँ पर हमको आना पड़ता है. इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद और रक्षात्मक तरीके से उसे खेला था. शॉर्ट कवर की दिशा में उस गेंद को ढकेल कर 1 रन मुकम्मल कर लिया. 18 रन स्कोर कार्ड पर. 18 for no loss in the second over. Jersey number 10, Manoj Kumar, right arm over. Sorry. Left arm round. Sorry. Over the heads, in the gap. 1 run taken comfortably. They're going for two easy runs. That's fine. That's because of the slow outfield, as I was just saying, there's lots of dew. If this had been in the afternoon, the ball would have definitely traveled all the distance for a boundary. स्ट्राइकिंग एंड पर सलमान पंगारकर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आदित्य, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी बाएं हाथ की गेंदबाजी. इस पर दबाव ऑफ स्टंप पर सफल हुए और उस गेंद को स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से खेला. डीप स्क्वायर लेग तैनात है वहां पे. जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक 1 रन लेने का यहां पे मौका. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा. 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं विदाउट लॉस. Manoj Kumar, left arm round the wickets to the Murud team. Murud team doing well with the bat. Aditya and Salman. Salman taking the strike now. Sultan Hasware. That should be a 6. Oh, what a catch that is. Lovely running catch on the boundary. He jumped slightly to reach the ball. And that's a perfect catch, perfect running catch. कुछ रन स्कोर भी किया उनके अगेंस्ट, तो इनके शोल्डर्स ड्रॉप नहीं होते हैं, यही उनकी खासियत है. और यहाँ इस कैच से इनके शोल्डर्स अगर थोड़े ड्रॉप हुए भी होंगे तो दोबारा विथ न्यू विगर दे आर गोइंग टू कम अप एंड दे आर गोइंग टू गिव अ फाइट टू द मुरुड टीम हु इज क्रूजिंग सो वेल नाउ. ओनली 1 wicket डाउन with 21 on board. Second over in progress. They are fighting tooth and nail. A very tough match. It's going to be a thrilling finish here. संतोष खाड़े here. संतोष खाड़े सर विद जर्सी नंबर 8. इनको हमने एटलीस्ट 15 साल से इस ग्राउंड पे देखा हुआ है. That's the experience that he has. Misses it altogether. Manoj Kumar with that fantastic ball. Lovely comeback. Though one catch also in the previous ball and then a dot ball.
Lovely comeback for the team. Second over of the match. That's a cut ball. Change the direction for a single. He's misfielded, but that's all they'll get. A single. So 22 for 1, 2 overs gone. Equation का for the equation is going to be 12 balls and 16 runs. 12 बॉल में 16 निकालना है यासीन सर. आपको क्या लगता है, क्या स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसा लग रहा है? 12 गेंदों में 16 रन यानी एक आसान सा लक्ष्य है बल्लेबाजों के लिए. और अब देखिए थोड़ी सी गेंद पुरानी भी हो चुकी है. हालांकि पावर प्ले का खेल यहां से खत्म होने के बाद बड़े स्ट्रोक यानी चौके लगाना बहुत मुश्किल, मगर हवाई फायर कर सकते हैं. और उसी के साथ सबसे बड़ी बात मुरुड टीम के लिए ये है कि उनके ऊपरी क्रम के मात्र एक ही बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं. अभी भी उनके पास बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं. अगर एक दो बड़े स्ट्रोक होते हैं, आते हैं बल्लेबाजों के जरिए से, तो ये मैच आसानी के साथ उनके पक्ष में, उनके पाले में जा सकता है. True, Yasin sir. That this is all about now air strikes. Right from hitting the ball over the fence to going and hitting power shots. That's what is going to matter in this over. This over probably will be the decisive over. यही ओवर में इस मैच का रिजल्ट निकलना है. That's what I feel. या तो बैटिंग टीम मारेंगी या तो फील्डिंग टीम विकेट्स लेंगी. एंड इस वक्त यहां पर सलमान ने ओवर द हेड जाकर ये 6 मार लिया है. करारा छक्का. और पहली गेंद पर छक्का आने के बाद गेंदबाज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव आ ही जाता है, मगर फिर भी इस मरतबा बल्लेबाज को थोड़ा सा चकमा दिया था. गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीला लिया था और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी. 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए. रनों की संख्या इन 2 रनों के साथ जा पहुंची है 30 रन. 8 runs to get. Third over in progress. As I said, this is going to be a decisive over. Salman leaving that ball alone for a huge wide. That's good judgment, umpire. Thank you very much. Jersey number 14 turning out to be a little expensive. Perfect square cut straight into the hands of the player at covers region for a single, although. Last 6 balls. 7 balls. 7 balls. मी अनाउन्समेंट करतो नंतर. 3 राहिले. 3 balls remaining in this over. Total 9 balls. So 9 balls, 6 runs. Heavily in favor of Murud team. So that's 8 and 5. 8 balls, 5 runs. 1 easy run. Next match between Uran and Mahad. Both the captains get up with their teams. Thank you very much, umpire. White ball. Patil sir, good morning. Thanks for all the facilities given to so many of these doctors playing over here. Admin team, hats off. And district sports coordinator, wonderful arrangements. Meanwhile, up in there should be a catch. And safe hands of Dr. Santosh Khade, who has been playing on this ground for the last 12 to 15 years. Tallish character, still agile, absolutely fit, handsome guy. Sir, आपसे motivation मिलता है, आपसे energies मिलती है यहाँ पर. Thank you very much. And he's a sprinter, he's a fitness freak. और यहाँ पर डॉक्टर राजेश शिंदे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर एंड घनश्याम पाटिल सर, ये भी यहाँ पर राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ आरएमए टूर्नामेंट्स, ये यहाँ पर इनके चेहरे देखे जाते हैं.
और यही चेहरे जिनके वजह से कंफर्ट फीलिंग और लोगों को आ जाता है। इनका हार्डवर्क, इनका डेडिकेशन, और ये एक दिन की मेहनत नहीं होती है, पूरे साल की मेहनत होती है, तभी इतना अच्छा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का हो जाता है। हेड्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू एंड द एडमिन कमिटी एंड दिस ईयर स्पोर्ट्स एडमिन कमिटी एज वेल। Dr. Wasim in sports admin committee, Sanjay Patil, Dr. Rajaram Hulvan, these are the all sports secretaries this year. Then the president Sahab, Nishigan Atwale Sahab, he has done a wonderful job, wonderful indoor games, and now RMA games, second day in progress. That's Wasim Peshimam, and was not able to read that ball, dot ball. Last over to go, 6 balls to go. 4 runs to get. 6 balls, 4 runs to get. Heavily in favor of Murud team, but यहाँ पर fighters है Kamote team, and we have seen previous matches. They have taken down the batsmen and they have not even allowed to score those 3 and 4 runs. Let's see, shoulders still top, still on top. They aren't being drooping down. सलमान लिहिले हो म्हणून बोललो. सुलतान तो प्लेयर चेंज करा ना. Okay, Sultan still there with Wasim Peshimam. 4 runs to get, 6 balls. Santosh Khade sir, he has come here with all the experience. Right arm over the wickets. 10 to 12 steps, run up. To Salman, and Salman has gone onto the leg side to the deep mid wicket. Lovely fielding there, but a poor throw. And all in all, people like Wasim, they are running there and taking 2 runs. I think the fielder could have done a little better if he had gone overhand and thrown the ball flatter straight into the hands of the wicket keeper. But that's good running between the wickets. Santosh Khade sir, just 2 to defend, 5 balls to go. 1 to equalize, 2 to win. Murud right on top. Salman taking the responsibilities for the Murud team. Wasim as a non-striker. For a single, and Wasim will be taking the winning runs. 4 balls to go. The score is tied up now. 1 to get to win. Let's see whether Santosh Khade sir can ball 4 dot balls. He's an experienced character, you never know. But we also know that Wasim is taking the strike there. And for Wasim, it's a matter of just 1 ball to go over the fence. Look at the unorthodox stance of Dr. Wasim. He will hit everything on the leg, no matter where you ball. Whether on the off or whether on the leg, he's going to go over the top only on the leg side. As I was saying, it's in the air, 1 run taken, and that's the end of the story. Murud have won this match comprehensively, and Kamote have gone down with 3 balls to spare. The score is now 39. यासीन साहब, ये अगर वो कामोटे टीम जो ले लेती तो टीम का बैलेंस कैसा होता? जी सर, मैंने आपको कहा था कि जो पहला ही कैच आदित्य का जो ड्रॉप किया था लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे 2 रन भी गए और उसी बल्लेबाज को जीवन दान मिलने के बाद फौरन उन्होंने एक छक्का भी लगाया था। तो कुल मिला के 8 रन, अगर ये अंतिम ओवर में होते तो कुल 14 रनों की ज़रूरत होती, तो फिर मैच कहीं पे भी बदल सकता था, पलट सकता था और कामोटे टीम को जीतने के मौके बढ़ जाते थे। मगर वो कैच ड्रॉप हुआ और मेरे ख्याल से वही एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक, मुरुड टीम ने इस मैच को जीता है। कल भी उन्होंने आखिरी मैच जीता था आदित्य के बल्लेबाजी के जोर पर, और अब यहाँ पे आदित्य ने फिर से एक बार अच्छी शुरुआत